What's up guys, welcome to another episode of Pehla Gear और मैं हूं आपका होस्ट उमर और आज मैं आपके लिए लाया हूं 2022 GMC SIERRA SLE। इस व्हीकल की डिलीवरी मुझे 2 हफ्ते पहले मिली थी, बट मुझे पता चल गया था तकरीबन 1 महीने पहले कि हम वर गेटिंग दी सियरास। आई वाज अ बिट एक्साइटेड बिकॉज यूजुअली हमारे पास GM में इनका शेवी वेरिएंट होता है, द सिल्वराडो। इट्स अ वर्क हॉर्स ट्रक, यू नो, इट डजंट हैव दैट मच फीचर्स इन इट। तो जब मुझे पता चला कि हमारे पास GMC आ रहा है, आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई लव GMC फॉर देयर सोफिस्टिकेटेड ड्राइव, देयर एलिगेंस इनसाइड द व्हीकल, उनकी सस्पेंशन बहुत मज़े की होती है। सो व्हेन आई फाउंड आउट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और जब मुझे पता चला कि it's coming with the new 2.7 V6 turbo, I was excited. So let's check this vehicle out guys. Let's take this on the winding countryside road. Let's take it towards the mountain. Aaj mausam thoda rainy types hai, so we might get right into rain, but overall let's see what this Sierra is all about. Let's go. Okay guys, let's check this out on the gravel road. अभी मैं 40 पे जा रहा हूँ। One thing I would say इसकी suspension काफ़ी stiff है. It's making you feel all these bumps, but they're not that bad. I mean, Tundra में तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रहे थे, लेकिन इसमें you can feel those little tiny bumps, but that's expected of GM. You know, it's more of a very like nice sophisticated drive. But, you know, overall जो ये Sierra का look है inside, जैसे you know the walnut wood trim लगा हुआ है और काफ़ी sophisticated looking front dashboard area है. It's really nice. I mean, I like that कि GM ने पूरी screen अंदर अब डाल दी है and it's all digital. That is amazing. You know, a lot of these new manufacturers that are keeping the old analog, I would like to see them move, you know, towards this digital platform. You know, for drivers, it makes their life so much easier. Like, you know, look, they have the odometer in the middle, like a big digital odometer. Or left side पर उन्होंने इतना प्यारा analog सा लगाया हुआ है that, you know, it just complements the layout itself. Steering wheel इसका ना बहुत ही normal GM feel है. It's nothing special, you know. If you own this vehicle, I would have, you know, different kind of leather casing on top, but you know, it's not that bad. Okay, one thing I really like guys is this 13.4-inch screen in the middle. I was playing with it earlier. Very nice, a lot of nice features, and it's a new layout, new platform that their GM's running on. I've never seen that before, so I'm looking forward to testing it out. Drive इसकी pretty smooth है, but like I said, suspension थोड़ी stiff है. That's how GM is. So you're feeling a little bumps, but they're not annoying at all. That's expected. That's normal. You know, one thing I noticed while driving, मैं अभी volume adjust कर रहा था and I couldn't find the button, and क्योंकि ये जब मैंने move around किया तो पता चला ये shifter जो है ना, ये पीछे से आपका home button और volume button पूरी conceal कर रहा है. So that's I was mind boggled. I couldn't find the button. I'm like, you know, I had to stop the vehicle over and look at it. So yeah, that's something that I don't really like. You know, one thing I notice is just going through these back roads, जब भी ये थोड़े slopes आती हैं, you know, little curves in the road, the car just you know, drives very nicely in those. ऐसे झूला महसूस होता है. तो इस तरह के कॉर्नर पे आपको थोड़ी स्लो चलानी पड़ती है. यूजुअली अभी बारिश हो रही है, अगर आपके टायर गर्म ना हो तो दैट्स यूजुअली डेंजरस. You know, one thing I also noticed, the feeling you get from driving this truck
is the exact same feeling you get from driving Yukon XLs, Tahoes. So obviously chassis unki almost same hi hoti hai ya same hi hogi. So that's one thing about the GM experience. Once you drive a GM, get trucks, SUVs, you get a very similar feeling on each one of the vehicle. GMC में अभी मेरी फ्लीट में आप दो व्हीकल्स हैं, एक ये सिएरा ट्रक्स और जो अब नई यूकॉन्स आई हैं वो हैं दो GMC में. बाकी आई मीन इफ यू लुक एट जनरल मोटर ब्रांड्स इन जनरल तो मेरे पास शेवी प्रोडक्ट्स भी हैं, ब्यूइक प्रोडक्ट्स भी हैं. सो या GM इज दे हैव जस्ट यू नो kept their own tradition going on the side while operating these, you know, multi-brands under them. This particular model is missing a sunroof, but I do see the place where they would put it. So a lot of these GM vehicles, to be honest with you, they're very customizable. Abhi mere dost ke paas ek 2011 ki Cadillac Escalade hai, and then we were driving down and I saw a similar Escalade but with the new lights on. So then he told me that hey, you can actually, GM just has like a, you know, a structure and you can customize all their accessories according to how you want them. So that's a pretty neat thing that GM does, that if you know, if you are into customization, that's a pretty unique thing. You know what, guys, in the previous video I forgot to cover the infotainment system of the Tundra. If you guys want me to, I will, but I was so disappointed with the infotainment system that, you know, it just didn't cross my mind. I should have covered it for you guys, but if you guys want, tell me in the comments. I will upload the video and let you know. I was not impressed by it. Apparently there are 18 point or 19 whatever inches screen that comes in the limited version. Apparently they're saying that it's the feel you get is of a phone. So I will, maybe when I'm at the dealership meeting my guys, I can actually just go over that with you quickly. You know, one thing I'm noticing, guys, the lack of storage space available. I mean, itni khali jagah hai, they could have utilized it. They kept it simple, but you know what, this is the workhorse version of the GMC truck. So I understand, you know, middle seat jo hai, they need the availability for another person. But I think in the next variants जो इनके आ रहे हैं उसके अंदर middle console होगा पूरा, ये 6th seat eliminated होगी. But even though it is the lower end of the Sierra, it's still so beautiful. You know, I've driven the 5.7 that used to come in the Sierras and Silverado as well. I was not a fan of that engine, although it's a 5.7 and a V8. It was such a lag in acceleration in that vehicle. I mean, once you get it to a speed, it was smooth, just like a normal the Sierra right now is. But just to get power out of it, there was such a delay in those engines. So I'm glad they're offering this 2.7 V6. And a lot of these truck manufacturer companies right now, they're moving towards, you know, more eco-friendly, smaller V6 engine in the trucks. I mean, aap agar jo Ford F-150 mein I believe it's 3.5 or 3.6 inka EcoBoost aata hai. I mean, it's such a fast, peppy engine. Usko chalane ka bhi apna maza hai. So I'm glad these all of these manufacturers are now turning towards more smaller engine and more, you know, torquey, you know, putting twin turbos in them and stuff like that. Guys, my next video will be a really nice surprise for you guys. I am going to be covering the 2022 Dodge Ram Rebel. I think it's Ram Rebel now. I mean, so that's going to be a duo with me and An. We will release that next week for you guys, and I have a lot of vehicles coming for you guys right now. Get ready, get excited. And if you have any requests, you know, let me know in the comments. I will try finding those vehicles for you.
ओके गाइस, कमिंग टू द स्टीयरिंग व्हील, वेरी मैट लुकिंग है। बीच में GMC का लोगो है, एक सिल्वर ट्रिम है अराउंड द मिडल एरिया, बीच में मैट क्रोम रिंग लगा हुआ है। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपके मिलेंगे। यू कैन सेलेक्ट द डिस्टेंस एंड सेट द क्रूज कंट्रोल फ्रॉम हियर। उसके साथ ही हीटेड स्टीयरिंग व्हील का बटन है, रियली हैंडी इन द विंटर टाइम। और राइट साइड पे आपको मिलेगा आपका ओडोमीटर क्लस्टर सब मेन्यू के बटन, सो यू कैन मेक सिलेक्शंस फ्रॉम देयर एंड इट्स अ वेरी कस्टमाइजेबल मिडल स्क्रीन। आई विल गो ओवर दैट विद यू शॉर्टली। और ये आपकी गूगल से कनेक्ट करती है एंड जस्ट टू शट द फोन ऑफ, दैट्स अ बटन फॉर इट। So then you can go back, अगर अपनी लेफ्ट साइड सेलेक्ट कस्टमाइज करनी है, you can make changes to that. let's select the options, आपकी कंपास आती है इसमें, टायर प्रेशर आ सकता है, फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, ट्रांसमिशन फ्लूइड। अगर आपने कुछ नहीं रखना, you can select none. Actually I like the time and temperature there, so I will leave it to that. Let's go back. राइट साइड कस्टमाइज करनी है, इस पर पहले ड्राइवर मोड आते हैं, कंपास आती है एग्जैक्टली द सेम, बट आई लाइक दैट ड्राइवर मोड देयर, लेट्स लीव इट देयर। लोअर गेज आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अगर आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहिए। अभी मेरे पास इंजन टेम्परेचर है, फ्यूल रेंज है, बैटरी वोल्टेज बता रहा है एंड आल्सो द इंजन प्रेशर। अगर आपने इसको मीडियम रखना है देन यू जस्ट गेट द फ्यूल levels in there and also the engine temperature. मिनिमम रखना है तो खाली करंट किलोमीटर्स, फ्यूल रेंज और आपकी गियर सिलेक्शन। तो लेट्स कीप इट टू मैक्सिमम, आई लाइक दैट। और गाइस, इन्फो पेज ऑप्शन पे काफ़ी सिलेक्शन है। आप यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दीज यू लाइक, ट्रिप 1, ड्राइव समरी, स्पीड, blank page, transmission fluid, very customizable according to how you want it set up. यूनिट्स पे जाके आप यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक इन किलोमीटर्स। स्पीड वार्निंग, अपनी स्पीड वार्निंग भी आप सेट कर सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू गो ओवर सर्टेन स्पीड। स्पीड साइन डिस्प्ले, वो ऑन हुआ हुआ है बट ही नीड्स टू कनेक्ट टू इंटरनेट टू गेट दैट डेटा। सॉफ्टवेयर इन्फो, आपको सॉफ्टवेयर इन्फो बता देगा सारी, एंड अगर आपने सब कुछ रीसेट करना डिफ़ॉल्ट पे then you can make the selection. So very nice, very customizable middle screen. I love that. I would like to see a lot of manufacturers adapt this technology. It's very nice. It's so much easier for the new generation, how they're able to customize these things according to their needs. Okay guys, next thing I wanted to point out, इसमें old steering wheel gear shifter है. You just put your foot on the brake, start shifting your gear. वो पीछे अपने gear change करता रहेगा. You put it in drive and you bring it right back up to put it in park. Okay guys, coming to the middle of the screen, a very nice 13.4 inches screen, very attractive with the wood trim इस पे जो walnut का लगा हुआ है, makes it look very nice, very elegant look दिया हुआ है. Okay guys, so platform पूरा Google based है इनका. You can see the Play Store, Google Assistant and Maps. You can't see the logo. My camera is not capturing it really nicely right now, but these are actual Google logos. So once you connect your Google account with it, pretty much becomes your mini computer. So selection आपकी home है, home पे आपको ये options मिलती हैं, आपकी audio, Google Assistant, Play Store, Maps, phone, Android Auto, Apple CarPlay, cameras. नेक्स्ट मेन्यू आप पे ट्रेलर लाइट लग जाएंगी, उस पर क्लाइमेट, सेटिंग्स, वाईफाई, हॉटस्पॉट, उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, माई GMC, गूगल न्यूज़ और पॉडकास्ट। सो अगर आप माई GMC में जाएंगे, आप अपनी स्केड्यूल सर्विस कर सकते हैं, माई प्लान्स, अपने प्लान सेटअप कर सकते हैं, रोड साइड असिस्टेंस है थ्रू OnStar, और ओनर्स मैनुअल्स आप अपना चेक कर सकते हैं। हाँ, सेटिंग्स में जाके आप अपना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द स्क्रीन, डिस्प्ले आप सेटअप कर सकते हैं, साउंड अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नेक्स्ट मेन्यू अप इज़ योर ऑडियो, आपने जाके सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, सैटेलाइट रेडियो, पॉडकास्ट, USB जो आपको चाहिए, AM FM, उसके ऊपर ब्लूटूथ कनेक्शन, ट्रेलर टेस्ट, सो मेरे पास ट्रेलर नहीं है और वी वुड हैव डन अ टेस्ट। राइट ऑफ द स्क्रीन आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला एक एनालॉग क्लॉक, वेरी नाइस लुकिंग, उसके बाद आपकी ऑडियो, और बाद में अगर आपने मैप्स अपना सेट करना है तो यहाँ छोटा सा मैप आ जाएगा आपका। जस्ट अंडरनीथ द स्क्रीन लेफ्ट साइड पे आपको होम बटन मेन्यू मिलेगा, उसको प्रेस करें तो सीधा आपको होम पे ले जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर आप इधर हैं, होम प्रेस करें, होम पे ले जाएगा, और ये आपका वॉल्यूम और पावर बटन है इसका। जस्ट अंडरनीथ द स्क्रीन गाइस, इसमें कपल ऑफ मेन्यू ऑप्शन है आपका छोटा सा, आपका लेन डिटेक्शन ऑन है, ऑटो स्टार्ट, ऑटो स्टॉप एंगेजिंग का है, पावर लिफ्ट गेट जो है इसका पीछे,
इमरजेंसी ई ब्रेक, ट्रैक्शन ऑफ और उसके साथ ऑल विंडो डाउन बटन। दिस इज़ अ वेरी यूनिक फीचर, मैंने कभी ये व्हीकल्स में नहीं देखा। आप अगर इस बटन को दबाएं तो आपकी चारों विंडो नीचे चली जाएंगी। आई गेस यू नीड दैट इन द हॉट कंट्रीज़, मिडल ईस्ट में जहाँ ये ट्रक जाता है। दैट्स अ गुड ऑप्शन कि गाड़ी में बैठे ही पहले ये बटन दबाओ ताकि सारे शीशे नीचे आ जाएँ। जस्ट अंडरनीथ दी स्क्रीन गाइज आपको पुश बटन स्टार्ट मिलेगा यहाँ लेफ्ट साइड पे। नाइस लुकिंग बटन, थोड़ा ग्लॉस फिनिश हुआ हुआ है अराउंड इट विद ए मैट क्रोम रिंग। उसके बाद आपकी हीटेड सीट्स आ जाती हैं इधर। यू हैव टू ऑप्शंस, अगर आपने फुल बैक और सीट करनी है आप सेलेक्ट कर लें, और इफ़ यू जस्ट वांट द बैक यू कैन सेलेक्ट दैट। डुअल क्लाइमेट कंट्रोल है, एंड देन यू हैव योर सिलेक्शंस देयर फॉर फैन सेटिंग्स एंड एवरीथिंग। एंड देन ऑन द अदर साइड आपको एक USB और USB-C पोर्ट मिल रही है। सो गाइस, स्क्रीन के ऊपर आपकी थोड़ी स्टोरेज अवेलेबल है, यहाँ वॉलेट कीज रख सकते हैं आप। एयर वेंट्स भी देर सॉर्ट ऑफ हिडन इनटू द स्क्रीन, वेरी नाइस लुक। और जो दूसरे हैं देर आउट इन द ओपन, एंड देन दैट वॉलनट फिनिश मेक्स इट लुक्स वेरी नाइस। ऊपर लेदर स्टिचिंग हुई हुई है, वेरी एलिगेंट लुकिंग। ओके गाइस, राइट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील आपको आपकी 4x4 ऑप्शंस मिलेंगी। उसके साथ अपनी हेडलाइट एडजस्टमेंट्स और इमरजेंसी ई ब्रेक मिलेगी। राइट अबव इट गाइज आपको ड्राइवर साइड का दूसरा एयर वेंट मिलेगा, वेरी नाइसली हिडन इन द ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, और उसके नीचे सिल्वर ट्रिम लगा हुआ है। एंड दैट सिल्वर ट्रिम एक्चुअली कंटिन्यूज राइट अंडर द स्क्रीन एज वेल, वेरी नाइस विद द वॉलनट ट्रिम एज वेल। ड्राइवर साइड वेरी नाइस, वही वॉलनट ट्रिम लगा हुआ है, ऊपर थोड़ी वो कुशन्ड लेदर फोम मटेरियल लगा हुआ है, वेरी नाइस लुकिंग हैंडल, मेटल टाइप से लग रहा है। And then nice silver trimming around the other side, very nice looking. Driver's door menu पे वो very standard, your window control, window lock और side view mirror controls. Okay guys, this is what I was talking about earlier. जैसे मैंने कहा था कि वो जो volume और menu button है वो they're hidden, so जब गाड़ी में drive में लगाता हूँ तो you see how that is hidden out of the view, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा. So that was what I was talking about earlier. ओके गाइस, ड्राइवर साइड एंट्रेंस आपको ऑटोमेटेड सीट एडजस्टमेंट्स मिलती हैं, पीछे लंबार सपोर्ट भी है, और अपॉल्स्ट्री इंटीरियर है इसका सारा। दिस इज़ ऑल प्लास्टिक, सो दैट्स वन डाउनग्रेड ओवर हियर। गैस पेडल इसके रेगुलर रबर वाले हैं, नथिंग स्पेशल। बीच में ये आपकी 6 सीट आ जाती है। इट्स ए मिडल कंसोल इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट। आपकी यहाँ स्टोरेज है, इसको पिकअप करें, स्टोरेज अवेलेबल है। एंड देन 2 cup holders, a little bit more storage. इसको अगर आपने फ्लिप करना है सीट बनाने के लिए, just flip it up like this, it becomes a seat. Okay guys, driver side entrance वही wood trim है, silver lining लगी हुई है, exactly the same as the driver, और नीचे आपकी वही storage है, and then leather stitching हुई हुई है यहाँ साइड पे। Right at the bottom here, rugged mats हैं इसके अंदर, silver trim लगा हुआ है on the door entrance, and the passenger seat is exactly the same as the other ones, upholstery है इस पे। Right underneath this guys आपको glove compartment मिलेगा, just a little bit of storage, nothing too much. Okay guys, one thing I noticed right underneath the climate control, ये जगह खाली है, it's just empty. Usually other truck lineups they're utilizing this as storage, so I think GMC should have put some sort of storage bin over there. Okay guys, driver side rear passenger entrance, exactly same layout है. One thing I noticed, there's a silver lining around the speakers, so that's a nice look. Okay guys, coming towards the rear seating, it's all upholstery again. थोड़ी space available at the bottom of the seat, आप जैसे utilize करें. They didn't make an actual bin underneath, but it's do as you please. इसको नीचे करने के लिए just pull it down, seat वापस आ जाती है. It's missing cup holders at the back here. Other than that, काफ़ी space है. एडल्ट अभी मैं बैठा था अंदर, काफ़ी आराम से मेरी टांगें आ गई थी, बहुत कंफर्टेबली मैं बैठा था इसमें। ओके गाइस, चाबी इस GMC की वायरलेस की है, पीछे GMC का लोगो है और सिल्वर ट्रिम लगा हुआ है यहाँ साइड पे, वेरी स्लीक, वेरी नाइस लुकिंग, बटन आर वेरी स्मूथ, एंड देन it comes with lock, unlock, remote start and automated tailgate drop and then panic button. सो इसमें मैनुअल चाबी भी आती है, बटन दबाएं तो ये आपकी चाबी निकल आएगी अंदर से, एंड देन अगर आपको रिमोट की बैटरी डेड होगी देन यू कैन स्टिल एक्सेस द व्हीकल।
Front trim guys, very nice looking, very aggressive look. काफ़ी प्यारा logo है बीच में. Chrome on the top and then matte finish on the grill. Makes it look very nice. LED lights जब on हो तो make it very beautiful. नीचे आपकी chrome plating लगी हुई है. Makes the vehicle look very nice, very stunning. Side view mirror में भी आपको chrome मिलेगा and then plastic at the bottom. Nice engraving over here. Right at the bottom of the driver door आपको Sierra का logo मिलेगा. Gas tank इसका driver side पे है. You just open it up. It's capless, really nice. So the culprit behind the cabin noise guys, इस पे liner नहीं लगे हुए पिछले टायरों पे, and that's why I was hearing a lot of rocks on the road. So that's one thing. We usually get them when we're selling these cars, but right now, just because of the purpose that they serve, we just don't put these on for now. Okay guys, coming to the back of the truck, आप देख रहे हैं काफ़ी प्यारा GMC का logo बीच में है, ऊपर 2 कैमरे लगे हुए हैं, and then there are 2 buttons. I'll go over what those buttons are for. नीचे Sierra का काफ़ी प्यारा chrome का logo लगा हुआ है, नीचे SLE का logo है. Just underneath the tailgate guys, एक stepping area, यहाँ आप step रख के bed enter कर सकते हैं. That's a really nice feature. I think GM is the only manufacturer that has this feature. I think they must have a patent on it. नीचे chrome plate है और नीचे hitch लगी हुई है. Very nice looking rear. So coming back to these 2 buttons over here guys, so the Sierra comes with the world's first 6-function multi-pro tailgate. So I'll tell you how that works. So the पहला button जो है वो आपका खाली bed flip down करेगा इस तरह, और जो उनका multi function है आपने पहले ये button दबाना है, फिर ये button दबाना है. तो ये देखें कैसे यूँ नीचे आ गया, and then अगर आप ये press करें तो it becomes like a full-on ladder to enter the bed. It's a really nice feature. It's only available in General Motor product. आप यहाँ पे step रखें and just climb up. Pretty nice. Climbing करते वक्त, if you want to hold on to something, ये एक handle आता है. You can grab onto it and just enter the bed. It's a very nice feature. Only found in General Motor products. Amazing. I love it. Overall guys, this truck was amazing. I had a great time reviewing it. I always love GM. Although this is the lowest trim that they offer in the Sierra, it was still a very nice sophisticated drive. It was a very sharp looking vehicle. This current model that I drove was cost around $58,000 Canadian. So overall it is a bit pricey. Obviously it's a GM, but in the same class range it's very affordable. Thanks for joining me today guys. I had a great time reviewing this truck with you. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो definitely like करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं what do you think of this Sierra. Until next time guys, have a great day.